Edulogy. Friends, today we will just prove some algebraic identities. क्योंकि जनरली क्या होता है that हम लोग समझ नहीं पाते कि वो फार्मूला आया कैसे, that means what is the proof of that formula. तो due to that our concept not clears well and और हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में अटकते भी हैं. तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ को डिस्कस कर लूं, और जैसे मैंने आपको बताया कि आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ का सीरीज चल रहा है. मैं आपको अभी से कुछ वीडियोस में कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ बताऊंगा. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आज हम लोग a प्लस बी टू बी होल स्क्वायर के टू फॉर्मूलाज को LHS और RHS दोनों से प्रूफ करेंगे. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंजॉय इट. सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज a प्लस b टू बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो अगर हम लोग इसे LHS से प्रूफ करें, सो LHS यहाँ पे क्या है, a प्लस बी टू बी होल स्क्वायर. हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मीन्स a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी. तो अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे हो जाएगा, एंड दिस विल मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड दिस. So it will be a into a square plus ab plus ba, and by commutative law we know a into b equals to b into a, that is ab equals to ba, so we can write ab at the place of ba. So here it will be ba, so we can write ab plus b square equals to a square plus 2ab plus b square. So hence यहाँ से हम लोगों ने LHS से प्रूफ कर दिया that a plus b to be whole square equals to a square plus 2ab plus b square. Now हम लोग अब इसे RHS से प्रूफ करने जा रहे हैं. तो RHS what is the RHS? a square plus 2ab plus b square. So हम लोग we can write 2ab as ab plus ab, so a square plus ab plus b square. So it will be a square plus, यहाँ पे हम लोग इस टर्म में a को कॉमन लेंगे और इसमें हम लोग यहाँ पे b कॉमन हो रहा है तो हम लोग b को कॉमन लेंगे. Here a is common and in bracket a plus b a plus b ब्रैकेट में. तो यहाँ पे a plus b कॉमन हो रहा है, सो a plus b इंटू a plus b. तो ये a plus b इंटू a plus b क्या हो जाएगा, वी नो दैट x इंटू x इक्वल्स टू x स्क्वायर. तो यहाँ पे a plus b इंटू a plus b क्या हो जाएगा, और इट विल बी a plus b टू बी होल स्क्वायर. तो अब हम लोग इसको RHS से भी प्रूव कर लेंगे that a plus b to be whole square equals to a square plus 2ab plus b square. तो आई होप कि आपको इसका प्रूफ समझ आ गया होगा एंड इसका आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा. तो आई एम जस्ट इरेजिंग इट. अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं देन यू कैन नोट. So now we are just going to prove the second formula. So the second formula is also of a plus b to be whole square. So that's a minus b to be whole square plus 4ab. तो अगर हम लोग इसे LHS से प्रूफ करें then what is the LHS here? a plus b to be whole square. So we know that it's a square plus 2ab plus b square. Now a square plus 2ab plus b square. Now we'll subtract 2ab, and it's the rule of mathematics that if we subtract anything then we should add. If we multiply anything then we should divide. If we divide anything then we should multiply. If we add anything
then we should subtract. This is the rule of mathematics. So यहाँ पे हमें 2ab ऐड भी करना पड़ेगा. So now a square plus 2ab plus b square minus 2ab plus 2ab. अब मैं इस 2ab and इस 2ab को हम लोग क्या करेंगे, add, and this will be here. So it will be a square minus 2ab plus b square plus 2ab plus 2ab. This is the formula of a minus b to be whole square plus 2ab plus 2ab means 4ab. So hence we have proved by taking LHS that a plus b to be whole square equals to a minus b to be whole square plus 4ab. And I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा. तो अब हम लोग इसे RHS से प्रूफ करने जा रहे हैं. That's so much easy. If you will factorize this, then we will get the result as a plus b to be whole square, and that we have to prove taking RHS. So RHS is a minus b to be whole square plus 4ab. So we know that it's a square minus 2ab plus b square plus 4ab. So that's now here 4ab and 2ab will subtract. The sign of big one is plus. So a square plus 4ab minus 2ab is 2ab plus b square. And this is the formula of a plus b to be whole square. So hence we have proved that a minus b to be whole square plus 4ab equals to a plus b to be whole square. And I hope that आपको ये समझ आ गया होगा. This we prove by taking RHS. तो मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ. अगर कुछ भी डाउट हो then comment me. और अगर चैनल पे नए हैं then subscribe my channel, like this video. So मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ. तब तक के लिए दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखें. बाय.